गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टास्क फोर्स फॉर सेफ्टी ऑफ मेडिकोस। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल्स को उसमें इंक्लूड किया है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाया जा सके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अक्रॉस कंट्री। तो अब आपको पता है कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हेल्थ और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। तो प्राइमरीली ये स्टेट गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे हेल्थ केयर वर्कर्स की जो है सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। तो इवन जो डिटेल्स होती हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स पर होते हुए अटैक्स की या उनकी फैमिलीज़ पर होते हुए अटैक्स की बाय द फैमिलीज़ ऑफ पेशेंट्स, उसका कोई डेटा जो है वो सेंट्रली मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेकिन एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर इल-लिट कॉरिडोर्स होते हैं, वार्ड्स सिक्योर नहीं होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो उससे जो है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वर्किंग कंडीशंस या लिविंग कंडीशंस को, और प्रॉपर लाइटिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरा, मैंड वॉक थ्रू बिटवीन डिपार्टमेंट्स देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इंडिया को बाकी कंट्री से सीखना चाहिए इस मामले में। जैसे कि यूके का जो एनएचएस है, वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वायलेंस पर, खास जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट। यूएस में भी कई स्टेट्स में तो हेल्थ केयर वर्कर्स पर हो रहे असॉल्ट्स को फेलनीज़ की कैटेगरी में डाला गया है। ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल्स में जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्सोनल, पैनिक बटन्स, डी एस्केलेशन ट्रेनिंग। ठीक है। इंडिया को जो है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की इसलिए ज़रूरत है जो कि ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें कि 10 मेंबर्स हैं, ताकि सेफ्टी और फैसिलिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एट देयर वर्क प्लेस जो है उसका ध्यान रखा जा सके। तो इसमें डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स को डाला गया है इस कमेटी में। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसमें डाले गए हैं, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन और प्रेसिडेंट जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के। तो जो एनटीएफ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस कमेटी को कि वो एक एक्शन प्लान बनाए और सेफ्टी और वेलबींग ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो है वो इंश्योर करे। ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर भी खासकर फोकस रहेगा इसमें, ताकि जो वर्किंग कंडीशंस हैं इंटर्न्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उसका ख्याल रखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ गई हैं। किस वजह से? क्योंकि टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन पर उनको जो है वो में जो है वो इसमें डिस्प्यूट हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मानना है कि जो ओ टी टी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे व्हाट्सएप या गूगल मीट, उनको भी टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर डालना चाहिए इस एक्ट में। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट क्या है? बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लॉ थे पहले, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, टेलीग्राफ वायर्स, अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबको जो है अमेंड कर रहा है इस एक्ट ने। और अब इस एक्ट के फीचर्स अगर हम देखें तो प्रायर अथोराइजेशन की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देना चाहते हो, एस्टैब्लिश, ऑपरेट, मेंटेन या एक्सपैंड करना चाहते हो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, या फिर रेडियो इक्विपमेंट को आप पोजेस करते हो, स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन के थ्रू दी जाएगी। मैसेजेस या क्लास ऑफ मैसेजेस को जो है इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स पर, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक इमरजेंसी। टेलीकॉम सर्विसेज को भी सस्पेंड किया जा सकता है इन सिमिलर ग्राउंड्स पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ मेजर्स जो है वो यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेगी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग के मैसेजेस को कंट्रोल करना, डीएनडी रजिस्टर मेंटेन करना, और एक ऑनलाइन मैकेनिज्म देना ताकि रजिस्ट्रेशन और रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज हो सके। ठीक है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो राइट ऑफ वे मिलेगा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर। तो ट्राई एक्ट को भी इसमें अमेंड किया गया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड को चेंज करके डिजिटल भारत निधि बना दिया गया है। और कुछ क्रिमिनल और सिविल ऑफेंसेस भी जो है वो पेनल्टीज़ के साथ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो एडजुडिकेशन प्रोसेस क्या है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगी, जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, पास ऑर्डर्स पास करेगा सिविल ऑफेंसेस के अगेंस्ट इस एक्ट के अंदर। ऑफिसर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो इश्यूज़ क्या हैं इस एक्ट में?
एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कोई भी मैसेज या क्लास ऑफ मैसेजेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स जिसको इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ठीक है। अब इस एक्ट में मास सर्वेलेंस के प्रोविजंस हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि प्रोपोर्शनेट टू ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्शंस होंगे या नहीं, ये जो है इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट जो है वो ऑथराइज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी के भी प्रेमिसेस को या फिर व्हीकल को स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पर जो है वो सर्च कर सकती है, ठीक है। एक्ट जो है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ यूज़र्स जो है वो बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। और ये क्या इससे प्रिवेसी या फिर फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी वायलेट होगा या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो डिस्प्यूट में आ गई हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे व्हाट्सएप या गूगल मीट, इनको भी जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज की तरह ही क्लासीफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट की अर्लियर क्लैरिफिकेशन के हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म जो है अभी तक इस डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं अपना स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं कि ब्रॉड डेफिनेशन है टेलीकॉम सर्विसेज की इस एक्ट के अंदर, तो इसलिए इनको भी इस एक्ट जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स या टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर ही डालना चाहिए ताकि इनके ऊपर भी एक्ट ये लग सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडस्लाइड हुई है जिसमें 6 हाउसेज जो हैं वो डैमेज हो गए हैं और एक बिल्डिंग NHPC की डैमेज हो गई है जो कि तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन को बिलोंग करती है सिक्किम के गैंगटॉक में। तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो 510 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर बेसिन गैंगटॉक में सिक्किम में। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये, डेवलप और ओन किया गया है NHPC द्वारा। तीस्ता रिवर क्या है, एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, और ये बाउंड्री है बिटवीन सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये राइज़ करती है हिमालय में नियर चुंगथांग इन सिक्किम, और ये क्रॉस करती हुई रंगपुर रीजन ऑफ बांग्लादेश को ज्वाइन करती है जमुना रिवर ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शाहीन-2 मिसाइल। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने रिसेंटली कंडक्ट किया है सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-2। शाहीन-2 एक पाकिस्तानी मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। कहा जाता है कि शाहीन-2 जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, और ये सॉलिड फ्यूल्ड 2 स्टेज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों पेलोड्स ये कैरी कर सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, ये रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स होते हैं जो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इनिशियली तो एक रॉकेट द्वारा पावर्ड होते हैं, बट एक बार जब ये एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाते हैं, एटमॉस्फेयर से निकल जाते हैं, तो ये अनपावर्ड ट्रेजेक्ट्री से जैसे जो आपकी जो है वो स्लिंग शॉट की तरह ये जाते हैं और फिर ये डिसेंड होते हैं अपने टारगेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का केस आया है 2 ईयर चाइल्ड फ्रॉम मेघालय में। तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी आपको पता है पोलियो फ्री स्टेटस मिल चुका है इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2014 में, और जो लास्ट वाइल्ड पोलियो वायरस का केस था वो 2011 में आया है, ठीक है। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें एक वीकेंड फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलेट करता है, और कुछ रेयर ओकेजन्स में क्या होता है कि अंडर इम्यूनाइज पॉपुलेशंस में जो ये वायरस है जब एक्सक्रीट होता है तो ये सर्कुलेट होने लगता है, जेनेटिक चेंजेस अंडरगो करता है, और ये इवन फिर पॉपुलेशन में फैलने की वजह से जो है ये पैरालिसिस भी कर देता है कई लोगों में। साल 2000 से लेके अभी तक ग्लोबली 10 बिलियन डोजेज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी हैं या फिर जो है वो एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। उसमें से अभी तक सिर्फ 24 ही ऐसे आउटब्रेक्स हुए हैं 21 कंट्रीज़ में, जिसमें लगभग 760 केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ही कम रेट है ऐसा ओरल पोलियो वैक्सीन का जो है वो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होने का। तो पोलियो जो है वो इरिवर्सिबल पैरालिसिस करता है, इवन डेथ भी कर देता है अगर वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दे तो 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स होते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के 1, 2 और 3, और सिम्टोमेटिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है उसका जेनेटिक और वायरोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। वायरस जो है प्राइमरीली फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है। 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक तो ओरल होती है, एक इंजेक्टेबल होती है। ये जो इंजेक्टेबल वाली होती है वो एडिशनल डोज की तरह मिलती है, थर्ड DPT वैक्सीन की तरह, ठीक है, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्कवरी ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स।
टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें कि पता लगा है कि वास्ट अमाउंट्स ऑफ लिक्विड वाटर मिला है हमें हिडन डीप विद इन मार्स का रॉकी आउटर क्रस्ट। तो पहली ये डिस्कवरी है साइंटिस्ट को जिसमें इसमें एविडेंस मिला है लिक्विड वाटर का मार्शियन सरफेस पर। तो ये रिसर्च जो है वो टीम ऑफ साइंटिस्ट द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की कंडक्ट की गई, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करेगी मार्स की वाटर साइकिल के बारे में, पोटेंशियल को बूस्ट करेगी हैबिटेबल इन्वायरमेंट्स ढूंढने के लिए मार्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो वाटर कंटेनिंग लेयर है लगभग 10 से 20 किलोमीटर्स डीप है विद इन मार्शियन क्रस्ट, और कई बिलियन ईयर्स अगो पहले जब मार्स का वार्मर क्लाइमेट होता था तब ये ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वहाँ पर। और कहा जा रहा है कि इससे जो है अर्थ के जैसे ही सिमिलर कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी डीप सी इन्वायरमेंट्स में, जो है वो मार्स में भी। लेकिन अगर हम हैबिटेबल करने की कोशिश करेंगे या कॉलोनाइज करेंगे मार्स को तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि 10 से 20 किलोमीटर नीचे जाकर ये वाटर वहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Task Force for Safety of Medicos or Healthcare Professionals. So this topic is important for your governance section. So Supreme Court has constituted a national task force of senior medical professionals to formulate a comprehensive safety protocol for healthcare workers across country. So what are the situations or what are the legal provisions with respect to healthcare workers across the country? So as per constitutional provisions, health and law and order are state subjects. Therefore, it is the primary responsibility of the state government or union territory administration to take note of such events and eventualities. So, the details of the number of fatalities of medical professionals due to attacks by families of patients are not maintained centrally because, of course, it is the responsibility of the state governments. So, experts have pointed out that medical colleges often have ill lit corridors, poorly secured wards, and long distances between departments. So, therefore, there is an urgent need to improve working and living conditions by ensuring proper lighting, security guards, cameras, manned walkthroughs between departments, operation theaters, and emergency areas. So, these simple measures could make a real difference. So, if we want to learn from the developed countries, then violence against healthcare workers is a global issue. UK's NHS enforces a zero tolerance policy on violence, supported by a dedicated security team and a comprehensive reporting system. In the US, some states classify assaults on healthcare workers as felonies, acting as a strong deterrent. Australian hospitals have introduced safety measures like security personnel, panic buttons, and mandatory de escalation training. So, India must urgently introduce a Central Protection Act and adopt similar measures to take stringent actions so as to ensure a safer environment for its healthcare workers. So that's why Supreme Court has formed a 10-member national task force to make a blueprint for the safety and facility of healthcare workers at their workplace. So this NTF will consist of a distinguished panel of medical experts from various specializations. So in addition to the core members, this NTF will also include ex officio members like the Cabinet Secretary of India, Home Secretary, Secretary of the Health Ministry, Chairperson of the National Medical Commission, President of the National Board of Examiners. So, this NTF has been tasked with the critical responsibility of devising an action plan for the insurance of safety and well being of medical professionals. It will particularly focus on gender based violence also and create a dignified working condition for interns, resident doctors, and non resident doctors. Okay. So the next topic is Telecommunications Act. This topic is important for your economy section. So telecom operators and social media companies are in conflict over the interpretation of the new Telecommunication Act, and the telecom operators are arguing that the OTT communication platforms like WhatsApp and Google Meet should be classified as telecom services under this act. So of course we all know, we have already read about this Telecommunication Act multiple times, that it aims to amend the erstwhile Telegraph Act, the Wireless Telegraph Act, and the Telegraph Wires
Unlawful Protection Act, and it aims to amend the existing laws governing the provision, development, expansion, and operation of telecommunication services in India. Okay, so if we want to look at the key features of this act, then prior authorization from the central government will be required to provide telecommunication services, establish, operate, maintain, or expand telecommunication networks, or possess radio equipment. Spectrum will be assigned by auction except for specified uses, and messages or a class of messages between two or more persons may be intercepted, monitored, or blocked on certain grounds, and such actions must be necessary or expedient in the interest of public safety or public emergency and must be in the interest of specified grounds. Telecom services may be suspended on similar grounds. Okay, central government may provide for measures to protect users, which include giving or ensuring prior consent to receive specified messages like advertising messages, creation of do not disturb registers, creation of creation of do not disturb register, or a mechanism to allow users to report malware or specified messages. So entities who are providing telecom services must establish an online mechanism for registration and redressal of grievances as well. So entities which have laid telecommunication infrastructure must seek right of way over public or private property. The act also amends the TRI Act, and it also replaces the Universal Service Obligation Fund with the Digital Bharat Nidhi. The Act also specifies certain criminal and civil offences and mentions the penalties for the same. The Act also provides that the central government will appoint an adjudicating officer to conduct inquiries and pass orders against civil offences under this Act. The officer must be of the rank of Joint Secretary and above. Okay. So the Act provides that any message or class of messages between two or more persons may be intercepted, monitored, or blocked on specified grounds. The Act also provides that any message or class of messages between two or more people may be subject to interception, monitoring, or blocking, which basically raises the concern regarding the en masse surveillance. So Act also allows any authorized officer by the central government to search a premise or vehicle on specified grounds. So uh, there is also a provision which allows the act under this act, which provides that telecom service providers must verify the identity of the users through any verifiable biometric based identification. This requirement should be proportionate, and it should, if it is not proportionate, then it would infringe upon the fundamental right to privacy of the customers. So telecom operators and social media companies, they are in dispute over the interpretation of the new Telecommunication Act, because they are arguing that OTT communication platforms should be classified as telecom services. So despite the government's earlier clarification that OTT platforms do not fall under this definition, telecom operators are maintaining their stance, citing the broad definition of telecom services in this act. And this ongoing debate highlights the ambiguity in the act's language and the differing interpretations by the stakeholders. Okay. So the next topic is Teesta 5 hydropower station. This topic is important for your economy section. So a landslide damaged 6 houses and a building of the NHPC at the site of Teesta 5 hydropower station in Sikkim's Gangtok district recently. So Teesta 5 hydropower station is a 510 megawatt hydropower project located on the Teesta river basin in Gangtok district, Sikkim. So it is a run of the river project, and it has an 88.6 meter high, 176.5 meter long and concrete gravity dam. It is developed and owned by the NHPC. Teesta River, we know that it is a trans-Himalayan river. It is a tributary of Brahmaputra River. This forms a boundary between Sikkim and West Bengal as well. So it rises in the Himalayas near Chungthang in Sikkim, and it crosses the Rangpur region of Bangladesh to join the Yamuna River, that is the Brahmaputra River. Okay. So the next topic is Shaheen 2 missile. This topic is important for your security section. So Pakistan military has recently conducted the successful training launch of the surface-to-surface ballistic missile Shaheen 2, which is a Pakistani medium-range surface-to-surface ballistic missile. It is believed that it has been derived from China's developed M18 missile.
So it is a solid fuel two-stage missile with an estimated range of 1500 to 2000 kilometers. It is designed to carry conventional or nuclear payloads. And ballistic missile is a rocket propelled self-guided strategic weapon system which follows a ballistic trajectory to deliver a payload from its launch site to a predetermined target. So they are powered initially by a rocket or a series of rocket in stages, but then it follows an unpowered trajectory and it arches upward before descending to reach its intended target. To understand it better, you can see how a slingshot is taken. So initially it is powered, but then it follows the trajectory in the atmosphere or out of the atmosphere, and it uses the velocity of the atmosphere to reach its target. Okay. So the next topic is vaccine-derived polio. This topic is important for your social issues. So recently, a vaccine-derived polio case has been confirmed in a 2-year-old child from Meghalaya. So India was declared polio-free by WHO in 2014, with the last wild poliovirus case reported in 2011. So oral polio vaccine contains a weakened form of poliovirus which stimulates an immune response. And on rare occasions, what can happen is that, especially under immunized populations, the excreted vaccine virus can circulate, it can undergo genetic changes, and then it can potentially revert to a form capable of causing paralysis. So, since the year 2000, over 10 billion doses of oral polio vaccine have been administered globally, which has resulted in 24 such OPV attacks or outbreaks in 21 countries with fewer than 760 cases. So this is a very small number of vaccine-derived polio cases. So what is polio? It can cause irreversible paralysis and even death, especially if it starts affecting the nervous system. So there are three different strains of wild polio virus, 1, 2, and 3. And although symptomatically they are similar, each strain has genetic and virological differences. The virus primarily transmits through the fecal oral route, and it can multiply in the intestine where it can invade the nervous system also. Okay, so primarily it affects the children under 5. So apart from the oral polio vaccine, there is also injectable polio vaccine, which is part of the universal immunization program of India. Okay. So the next topic is discovery of liquid water on Mars. This topic is important for your science and tech section. So a recent study has uncovered the presence of vast amounts of liquid water hidden deep within the Mars rocky outer crust. And uh, this is the first such discovery, and this is the first time that scientists have found evidence of liquid water on the Martian surface. So this research was conducted by a team of scientists from the University of California, and this discovery could deepen our understanding of Mars water cycle. The presence of liquid water boosts the potential for finding habitable environments, enhancing the ongoing search for life on Mars. Okay. So this study has identified a water containing layer located at depths of 10 to 20 kilometers within the Martian crust, and this water is believed to have seeped from the surface billions of years ago when Mars had a warmer climate, and it had more permeable upper crust similar to groundwater infiltration on Earth. So what are the implications of this discovery? The conditions may be similar on Earth's deep sea environments which harbor life despite extreme conditions. So extracting water from depths of 10 to 20 kilometer poses significant challenges, complicating plans for human colonization of Mars. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.